and welcome back to our channel Great Gain. So let's start the video without wasting any time. We will be doing grammar practice for ICSE class 10. So let's start with tenses. Okay, you all will pause the video, okay, and write all the answers beforehand, and then we can discuss. Right, the first one: while dash in the class, the teacher looked outside the window of his classroom while teaching in the class. Okay, there he saw, right, a 9-year-old boy, shabbily dressed and shivering with cold. The teacher called him in. The poor boy was in tears. "I have done nothing wrong," he said. "I was just here to listen to your lessons and learn something before going to the store. But if you don't want me here, I won't come back." "Why don't you go to school?" asked the teacher. "Because my father can't afford to pay the school fees every month," sobbed the boy. "Well, let me see if you know anything. Tell me something about what I taught in class yesterday." The boy remembered everything, and the astonished teacher said, "Don't worry about the fees. I will speak to your father." Later, the boy became a great scholar and an outstanding writer. Okay, right? I hope all of you got all the answers correct. So you can also check your answers here, right? Okay. So let's move on to our second topic, that is fill in the blanks with appropriate words. These all, see, for these types of questions you have to practice a lot of grammar exercises for this, right? So that your accuracy will be 100%. I want you all to score really well, and I know you all can score well, but for these type of questions you really need to practice a lot. So let's start with the first one. "I saw Jane last summer, but since then I haven't seen her." Okay, there were old magazines lying around in his room, about in his room, right? About, it will be about, in his room. The third one: a wooden barrier was placed across the road. Okay. The fourth one: the child crawled under the bed in an attempt to hide. Right. The fifth one: they do not work properly during the festival week. Okay. The sixth one: we walked on till we reached the bridge. Okay, right? The seventh one: these souvenirs are of no value. Okay, we decided dash a picnic in view of the bad weather. It will be against. Okay, we decided against a picnic in view of the bad weather. So let's start with the next our next question. It will be joining the sentences without using and but. So these are the easy ones, right? You can easily do this type of questions. "Bring me the newspaper which is in the drawing room." Okay, right? The second one: "Could he give us a loan?" I did not know. I did not know if he could give us a loan, right? The third one: everyone opposed Edison, however he disregarded their opinion. It will be Edison disregarded the opinion of everyone who opposed him. Okay, right? The fourth one, the last one: my father will send my sister to college. He will also send me to college. It will be my father will send me as well as my sister to college. Okay, right? So there can be questions asked like this type of questions, like, right, you using as well as, hardly when, no sooner than, this type of questions. So it's important that you remember these things. Hardly will come with when, no sooner will come with than. So it's important. Okay, right? I hope you also got your all the answers correct here. Let's move on to the next question. You can also check your answers here, right? So okay, so let's start with transformation of sentences. Right, the first one: both the sons never help her in the morning. Begin with neither. Neither of the sons helped her in the morning, right? The second one: if you need help, contact the travel agent. I advised the tourist. Begin with the tourist. The tourists were advised by me to contact the travel agent in case they needed any help. Okay, right? The third one:
Both Arun and I walked out of the meeting. Arun walked out. We have to begin with that. So it will be Arun walked out of the meeting, so did I. Okay. The fourth one, my cousin is short, yet he is a good basketball player. We have to use in spite of, right? Okay, so these type of questions are also important, right? We have to use in spite of, and you also have to remember that you can't use despite of, right? That's very important. Some people might make this mistake, right? In the examination hall, you might get nervous, you will write despite of, and then the answer will be wrong, right? So don't do that. Remember this: in spite will always come with of, and despite being it will be right. I will okay. I'm You also do it in spite of, and you also write the sentence, this same sentence with despite of, despite being, okay, right? With using despite, and then we can discuss both the answers, right? So I'm telling you with first with in spite of, and then I will tell the next answer with despite. So let's do this. In spite of being short, my cousin is a good basketball player. Okay, right? Now with despite being short, my cousin is a good basketball player. I hope you got both your answers correct. Let's do the fifth one. The government will raise the oil prices soon. Begin with the oil prices. The oil prices will soon be raised by the government. The next one, she can only go for the picnic if she gets better. Unless she gets better, she cannot go for the picnic. The seventh one, didn't I meet you in the school yesterday? I met you in the school yesterday, didn't I? The last one, he said I have not done that. He denied having done that. Okay, right? So I hope your you can also check your answers here, right? All the answers are given. गाइस ये वाला करते हैं, ठीक है? एक तो एग्जांपल आपका दिया हुआ है स्लोट, ठीक है? फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं. आई पुल्ड अप इनटू द ड्राइववे, ऑब्जर्व्ड द वे दे हैड built up the balcony. I forgot that the bricks of the house were chocolate brown. The new people made the tiny balcony into a study room. I stared at this house, remembering my childhood there. ठीक है, चलो. आई होप सारा आंसर सही हुआ होगा आपका. आप सारा आंसर वीडियो पॉज करके सारा लिख लो, उसके बाद फिर मेरे से मैच कर लो, ठीक है? चलो सेकेंड वाला करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है? फर्स्ट वाला, प्लीज़ वॉश ऑफ द करी स्टेन फ्रॉम योर ड्रेस. सेकेंड, शी टर्नड डाउन द ऑफर टू वर्क एट द फैक्ट्री. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पार्टी का क्वेश्चन पूछ ले ऐड करके आपसे, शी टर्नड अप फॉर द पार्टी. ठीक है, ऐसे होता है, याद रखना. ये भी इम्पोर्टेंट है, एक एग्जांपल आपको दिया अभी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. चलो सी करते हैं. द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस. ठीक है, व्हेन द फैमिली वाज अवे. नंबर डी, आई शैल कम्पीट अगेंस्ट हिम. ठीक है. नंबर ई, शी अग्रीड टू माई प्रपोजल. ठीक है. नंबर एफ, शी वुड लाइक टू कम डैश फूट, ओवर फूट होगा. नेक्स्ट वाला, द विश्वास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैज़ टेकन डैश द कॉस्मेटिक मार्केट कम्प्लीटली, ओवर होगा. ठीक है, कम टेकन ओवर, ले लेना मतलब. ठीक है. ही अग्रीड टू कैरी डैश द मैनेजर्स ऑर्डर, यहाँ पे होगा अलॉन्ग. ठीक है, ही अग्रीड टू कैरी अलॉन्ग द मैनेजर्स ऑर्डर्स. चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, विदाउट यूजिंग एड बट और सो वाला. यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं बेसिकली. ठीक है, जैसा मैंने बोला वैसे याद रखोगे तो ईजीली हो जाएगा. यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है. ग्रामर में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा. और स्पेशली ये यहाँ से तो बहुत ईजी है. आपका मार्क्स अगर कट सकता है तो देखो दो ही जगह पे कटेगा, या तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कट सकता है, या तो आपका कटेगा वो आपका अप्रोप्रिएट वर्ड्स वाले एरिया पे, प्रीपोजिशंस पे. ठीक है, तो ये वो दोनों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. ठीक है, चलो फर्स्ट वाला करते हैं.
द डेलीगेट्स अराइव, द मीटिंग स्टार्टेड इमीडिएटली। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नो सूनर डिड द डेलीगेट्स अराइव दैन द मीटिंग स्टार्टेड। सेकेंड वाला, वी लॉस्ट आवर टिकट, वी लॉस्ट आवर लगेज। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वी लॉस्ट आवर टिकट एज वेल एज आवर लगेज। एज वेल एज मैं बोला था, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, ही कल्टिवेट्स ऑर्किड्स, ही डिस्प्लेज दम एट द फ्लावर शो। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ही कल्टिवेट्स ऑर्किड्स बट डिस्प्लेज दम ओनली एट द फ्लावर शो। ठीक है, इसका यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, कॉमन ही होगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर 4, ही रैन अवे, ही हैड सीन द प्रिंसिपल कमिंग। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीइंग द प्रिंसिपल कमिंग, ही रैन अवे। ठीक है, चलो आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। आप अपना आंसर्स ऐसा मैच करते रहना। यहाँ पे अब हम लोग फोर्थ वाले चेक करते हैं। ठीक है, आई वांट आप लोग का सबका अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, आएगा, टेंशन मत लो, बस अच्छे से करते जाओ। चलो फोर्थ वाला से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, द कैप्टन सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। अच्छा देखो, एक और चीज़, इससे पहले कि मैं आंसर करूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर दूँ, आप एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे स्पेसिमेन में तो वो लोग आपको दिया है कि दिस इवनिंग यूज़ करो, तो ये तो आपका जब आंसर में दोगे तो हो जाएगा दैट इवनिंग, राइट। तो एक और चीज़ है, ये याद रखना, यस्टरडे का क्या होता है, द डे आफ्टर होता है, वो वाला फ्यूचर के लिए जब आता है तो आपका यस्टरडे के लिए आता है द डे बिफोर। तो ये जो एग्जांपल्स रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर हो सकता है एक क्वेश्चन आपको दे दे, तो इसलिए आप ये वाला हम चेक करके जाना है, याद से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला चेक करके आना। अच्छा, इस पर आते हैं, इसका आंसर बताता हूँ मैं। इसका होगा आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द कैप्टन सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। ठीक है, नंबर 2 वाला करते हैं, अनलेस द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम वी शैल मिस द कॉन्सर्ट। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ द ट्रेन डज नॉट अराइव ऑन टाइम वी शैल मिस द कॉन्सर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, ही हैज़ अप्लाइड मेनी टाइम्स, ही हैज़ नेवर बीन सेलेक्टेड। यहाँ पे यूज़ करना, देखो मैं आपको पहले भी बोला उस वाले वहाँ पे भी क्वेश्चन पे कि इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंस्पाइट ऑफ आता है हमेशा, डिस्पाइट बीइंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग मैनी टाइम्स ही हैज़ नेवर बीन सेलेक्टेड। ठीक है, ईजी है। अच्छा, नंबर 4 पे आते हैं, वेरी फ्यू मैनेजर्स आर एज ऑनेस्ट एज जेम्स। यहाँ पे एंड करना है मैनेजर्स के साथ। ठीक है, नंबर 4 वाला ऑप्शन सी होगा, जेम्स इज़ ऑनेस्ट दैन मैनी अदर मैनेजर्स। ठीक है, नंबर 5 वाला करते हैं, आई एक्सेप्ट योर ऑफ़र। यूज़ करना है यहाँ पे एक्सेप्टेबल। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये वाला 4 वाला हो गया, आपका 5 वाला आ गया, यहाँ पे हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी में गलती करके आ सकते हो, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना, गलती मत करना, कोशिश करना गलती ना हो। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, ज़रूर अच्छा होगा आप लोग का एग्ज़ाम। ठीक है, नंबर 5 का होगा ऑप्शन नंबर ए, योर ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेबल टू मी। ठीक है, नंबर 6 करते हैं, एज सुन एज ही फिनिशेस हिज वर्क ही स्टार्ट्स प्लेइंग। ठीक है, बिगन करना हार्डली। देखो मैं बोला हार्डली से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला बोला नो सूनर दैन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर सी का होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हार्डली डज ही फिनिश हिज वर्क व्हेन ही स्टार्ट्स प्लेइंग। ठीक है, नंबर 7 वाला करते हैं, माई फादर गेव मी अ पेन। स्टार्ट करना है आपको अ पेन के साथ। ठीक है, नंबर 7 वाला है, इसका होगा ऑप्शन बी, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर। ये हो गया एक्टिव पैसिव फॉर एग्जाम्पल आपका। नंबर 8 वाला करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला है, आई हैव नेवर सीन मिस्टर जॉय लूज हिज टेम्पर। ठीक है, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 8 सी। ठीक है, नेवर हैव आई एवर सीन मिस्टर जॉय लूजिंग हिज टेम्पर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वाला स्पेसिमेन पेपर भी फिनिश होता है। आप सारा आंसर्स मैच कर लो, आप देख लो कितना आ रहा है आपको, कितना सही हुआ कितना सही नहीं हुआ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछो। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। होप करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइजेस प्रोवाइड किया वीडियो में तो पसंद आएगा। ठीक है,
अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में डू आस्क मी, ओके, भूलना मत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। वी विल कीप कमिंग विद मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू ऑल। लव यू गाइस, सी यू, बाय। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। एग्जाम